Hi guys, welcome to the new video. My name is Manohar and today we'll be covering mock test number 16, the DILR section. Since we are very close to the D-Day, I've been talking to a lot of my friends from my own year. All of them are in the top percentile. I even talked to the 100 percentile of our year, and all of them told me the same thing. They have different strategies with respect to when it came to verbal, and they have different approaches to look at it. Like I talked to 4 people, and 3 of them had a different approach, and 1 of them had an aligning approach, like I did, right? So, but with respect to DILR, all of them were of the opinion that one thing in common is first to go through the entire paper and only then start, solving the sets. And ask them had if you were posed with the dilemma of solving the paper in 40 minutes and not 60 minutes, right? So I wouldn't quote who or which percentiler told me this particular thing, but the advice was that what you need to do over here is, if I was posed or proposed with this particular situation, is I would have started scanning the paper and prioritizing, okay, this is doable or not doable, and the moment I hit those 2 sets that I think are really doable, I'll directly start solving those 2 sets, and only then after that I'll scavenge the rest of the paper also, right? So say अगर मैंने 26 से 26 से 29 एक सेट है, राइट, वो मेरे को डिफिकल्ट लगा. 30 से 33 एक सेट है, एंड 34 से 37 एक सेट है, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी डूएबल, एंड आई नो द एग्जैक्ट मेथड, एंड आई नो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द पेपर फर्स्ट 38 से, ठीक है, he said that he would have attempted these 2 and only then moved ahead. ठीक है, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये 2 सॉल्व हो रहे हैं, ये तो रिजॉल्व हो रहे हैं, तो आप पहले उनको बैक कर लीजिए एंड देन उसके आगे आप स्कैवेंज कीजिए, विच इज फेयर. If you ask me, I would still stick to what I'm following, but I'm only telling you all about this particular thing or this particular strategy which was which was put in front of me. The only reason I'm mentioning it is because I want you all to have all the options in the world. I keep seeing these queries that भाई अगर हमारा पेपर का टाइम इतना कम हो गया तो हम कैसे कर पाएंगे सॉल्व, आपका स्ट्रैटेजी शायद टाइम ज़्यादा ले ले, उतने टाइम में शायद हो पाए या नहीं हो पाए. सो दिस इज अ काउंटर मेजर टू दैट. If this is working, then you could try this also. I'll not be displaying that particular strategy to you today. I'll still be sticking to my strategy, and I'll be showing you the basic purpose and the basic objective of these sets are to show you that how you need to be bucketing or strategizing, how, or you need to go about with the paper. There could also be moments where the question reads very small, the language is very easy, and the data that you're going to be dealing with are very less, but it could be a tricky set, which happened last year, right? So again, about that, I've already reiterated in my number of videos that, guys, if a particular set is taking too long, like much above the time that you had actually planned to give it, right, एक डिसाइड कर लो कि 10% मैंने जितना टाइम अलॉट किया उसके ऊपर अगर निकल लिया तो आप आगे मूव ऑन करोगे, ठीक है. एनीवेज, लेट्स डाइव इनटू दिस DILR सेक्शन एंड लेट्स सॉल्व. एंड वन थिंग दैट यू माइट बी नोटिसिंग, मेरे इंट्रोडक्शन थोड़े और लंबे होते जा रहे हैं, बिकॉज आई डोंट जस्ट वांट these videos to be about the video and the strategy itself. I also want it to be a conversation. I am proposing and I'm putting forward all the thoughts and all the things that I am experiencing on a daily basis. जब मैं इनसे बात करता हूँ लोगों से, तो वो क्या कहते हैं मुझे, right? So on that note, let's begin. Okay, so यहाँ पे हमारा पेंट है, उसको भी साइड में रख देते हैं. Okay, I'll just have the tool ready. Okay, and there you go. ठीक है. So this is the very first set, study production. Okay. बहुत कम टेक्स्ट है टू रीड. There's actually nothing to read. फर्स्ट टेबल में बेसिकली आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है ऑफ 7 कंट्रीज. ये नंबर्स दिए गए हैं, okay, in 2016, and percentage and now table number 2 shows percentage increase in production, export and import, okay,
and some values are missing. You have to calculate these. Consumption equal to production plus import minus export, that is fine. And क्या बोला per data given in the question. Perfect guys. So one thing that I can gauge, and I'll definitely be solving this one because यहाँ पे directly numbers दिया है and काफी linear sum है, right? यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोडक्शन में कितना परसेंटेज इंक्रीज है, ये आपका बेस नंबर्स हो गया, राइट? एंड एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन विल हैव डिफरेंट डेटा सेट टू गिव. सो बकेटिंग अगर मैं करना चाहूँ, राइट, तो ये वाला क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होगा, बट बकेटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेट इज ईजी. एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. अगर एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा या कुछ डिफिकल्ट है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज ईच क्वेश्चन इन दिस सेट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है. Increase in production, China 5% more than that of Pakistan, increase percentage in export, right? यहाँ पे इन्होंने अलग से दिया हुआ है 5% more than that of Pakistan. पाकिस्तान का प्रोडक्शन 15 से बढ़ रहा था, so चाइना का बढ़ेगा 20 से, so on and so forth. Perfect. Let's see how many questions there are. 26 से start हो रहा है. Okay, 27, 28, okay, for Pakistan, China respectively, then total import for all the 7 countries. थोड़ा लंबा question but still doable. ठीक है. The percentage in import, percentage increase, okay. Which of the following countries has the highest percentage increase in crude oil consumption? Perfect. Wow. Okay, one second. Wow, there are 5 questions from this set. Okay. From China is this. Gallons total production for Nepal is 2018. Find the increase in production of crude oil. Okay, still doable guys. So 26 to 30 है यहाँ पे number of questions. So let's bring the paint over here. 26 to 30 लिखूंगा मैं यहाँ पे. यहाँ पे the set is about import export and यहाँ पे मैं इसको doable लिखूंगा definitely. बट ये मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे जाएगा बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सॉल्विंग ईच क्वेश्चन मे बी, राइट? सो इसको थोड़ा आगे रखते हैं. डूएबल है डेफिनेटली, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है बट दैट अगेन कुड बी अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. लेट्स मूव ऑन. ग्रुप ऑफ 6 participated in national chess. Stage 1, each group played against each other exactly once. Oh, there's a lot to read. End of stage 1, the 6 groups were ranked such that the group with the highest number of points was ranked first and the group with the lowest number of points was ranked 6th. Only the top 4 of the, okay, top ranked group played against the 4th ranked group while the 2nd ranked group played against the 3rd ranked group. Okay, right. Points scored G1 का आपको okay, ठीक है, आपको बेसिकली मिल जाएगा कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं. पॉइंट्स फॉर, पॉइंट्स अगेंस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इमर्ज एज द विनर ऑफ द कंपटीशन. ओके, ठीक है. स्टेज 1 स्टेज 2 दिया नहीं है. ओनली द टॉप 4 टीम पार्टिसिपेटेड इन स्टेज 1. द टॉप रैंक टीम. यहाँ पे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है डायरेक्टली एज टू हाउ आई एम गोइंग टू बी अप्रोचिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Even though it seems easy, but इसमें data काफ़ी ज़्यादा है and I'll definitely keep it until it's not that it's undoable, right? It's not very difficult, but something that I'm not so inclined towards solving. What is the total number of points scored by G5 at the end of stage 1? Okay. What is the total number of matches that ended in draw? Okay, in the competition. Okay. ठीक है. Fair. Study. Okay, ठीक है. So this is 31 to 34. 4 questions है and I'll give it a till. Yes. 31 to 34 equal to COMPTITIONS equal to till. Okay. 35 से देखते हैं इसको. मल्टी स्टोरी होटल, 4 फ्लोर्स है, 120 guests each floor, utilizing each floor in a day. थोड़ा लंबा सम रीड करने में. Dependent on the number of guests accommodated. Okay, fixed cost है, variable cost है. Interesting, my kind of sum. I really enjoy doing these. The number of guests that should be accommodated on each day is set in advance. Okay, advance में मालूम रहेगा.
Okay, floor 2 will be functional only with floor 1 alone is not. Okay, each floor can accommodate 120 guests. So basically जब मेरे पास 120 के ऊपर लोग होंगे तो फ्लोर 2 में जाएंगे, 240 के ऊपर होंगे तो ही फ्लोर 3 पे जाएंगे, and so on and so forth. Fair. Simple. We have the number of bookings, number of guests per day. Perfect. We have fixed. Beautiful. Easiest sum. Had I followed what my friend told me, I would have directly started solving this sum because this is very easy. What is the total number of guests accommodated by floor 3 during the 10 days? Key in the number. Very easy to solve, guys. देखिए 120 in floor 1. फ्लोर 3 में कब जाएगा? जब 240 के ऊपर एक दिन पे आपके बुकिंग्स होंगे. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 30 ओवर हियर 270 का. यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा. ओके एंड या परफेक्ट. दिस सीम्स डूएबल. 120 आ जाएगा. 12 3 या 120. यहाँ पे 30 150. यहाँ पे 110 एंड यहाँ पे 120 पूरा, यहाँ पे भी 120 पूरा. ठीक है गाइस, दिस इज अ वेरी डूएबल सम. 12 3 36 360. यहाँ पे 30 390 एंड यहाँ पे 110 500 आ जाएगा आंसर आपका सीधा. एंड ये वर्बली सॉल्व हो रहा है. सो आई वुड डेफिनेटली बी गोइंग फॉर दिस सेट. 35 से स्टार्ट हो रहा है. 36 देखते हैं क्या सम है. What is the total fixed cost incurred during the 10 days? Key in the value. Fine. Can be done definitely. On which of the following days will the fixed cost or the percentage of the variable cost will be the lowest? This is also fine. ठीक है. 38. What is the total cost per guest incurred during the 10 days? Beautiful. ठीक है. I think इधर तक ही होगा. Perfect. 38 तक है. 38 hotel छोटी EL something that I will definitely be taking it. plus कर दो उसको, फटाफट ले लेंगे उसको. Right, this is okay. Are playing a game in which they have to enter some number. Output generated is distinct each time. The output would be bigger than the number entered. Every person gets one chance. They enter a distinct number. The input number, the output number, and the difference between the input and output are all positive integral multiples of 5. And you have then a bunch of conditions. Okay, something I'm not very keen on. Like यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे शायद कुछ लिमिटिंग फैक्टर भी होगा. और 6 कंडीशंस है. एंड ऐसा भी नहीं है कि 6 कंडीशंस आपके छोटे हैं. 6 कंडीशंस आर क्वाइट बिग एंड प्लम्पी. सो आई विल बी कीपिंग दिस फॉर लेटर. व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस? 39 40 देख लो. What is the output of the rows? 41. What is the input number of family? Key in the value. And 42. If on one particular day one person, Mr. X, enters 50 times, and the difference between input. Okay, who is Mr. X? Okay. 43. 42 तक है ये. 39 to 42. To 42. Okay. Game. Tilde. Not very keen. बाद में देखा जाएगा. क्वेश्चन इतना भी बड़ा नहीं है बट बड़ा है. लाइक उसके कंपैरिजन में आई हैड अ बेटर सेट. आई सी अ बेटर पैटर्न. मिस्टर वेबस्टर आइसक्रीम शॉप है. 5 टाइप के आइसक्रीम्स है. मैक्सिमम प्राइस दैट ही सेल्स एमआरपी पे. एमआरपी 5 दिए हैं. ऑन अ पर्टिकुलर डे उन्होंने 7 लोगों को बेचा. ओ परफेक्ट, माय फेवरेट काइंड. दिस गोज राइट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. सोल्ड एन आइसक्रीम टू कंपनी बी. यहाँ पे ऑप्शंस में मल्टीपल वाले ऑप्शंस नहीं है. सो दैट्स गुड. What is MRP of company E's ice cream? Okay, ambiguity वाला नहीं है. Mr. Webster sold 2 ice creams of which of the following companies to 2 different customers? Cool. यहाँ पे भी options में multiple options नहीं है. So that is definitely a good sign. शायद scenarios नहीं बने. It's not a short method to infer that, but it's a hint कि शायद इसमें scenarios ज़्यादा ना बने. ठीक है. So the following can be the selling price of the ice cream that he sold to Arvel. Okay, definitely taking this set and loving this set. Perfect. राइट, इधर जाते हैं. 47 तक है. 43 to 47. दिस अगेन इज आइसक्रीम एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस. ओके, सो एट दिस पॉइंट आई हैव आइडेंटिफाइड 2 वेरी डूएबल सेट्स. 35 to 38 एंड 43 to 47. सो या दैट इज अ गुड न्यूज. एंड उसके अलावा भी जो वेरी फर्स्ट सेट था वो भी काफ़ी डूएबल है. एंड नेक्स्ट सेट क्या रहेगा, कैसा सॉल्व कर सकते हैं.
फर्स्ट टैबलेट ओके 30th सितंबर 2010 अप्रैल को लॉन्च किया एंड एंडेड ऑन सितंबर 30th. ओके बुकिंग चालू किया था. Only one model in the entire lineup and it was offered at a fixed price. There were 3 modes of booking. Premium booking, one had to pay 105% of the tablet. Okay, normal booking was done in nth month. This was delivered in n plus 1 month. So April में किया रहेगा तो आपको May में आएगा. Discounted booking, if the booking was done in month, it was delivered in n plus 2th month. So April में किया होगा तो June में आ जाएगा. Perfect, perfect. ये this is the conventional kind of set. I love this. Oh wow, it gets easier. Except April. Exactly 1/5 of the bookings were normal bookings. Love it. I would definitely go for this. Yeah, 47 to I'm assuming 50 तक जाएगा. 49 पे तो नहीं रोकेंगे hopefully. How many tablets booked in June were delivered in August? 50. In how many months did the number of discounted bookings constitute not more than half the bookings? Okay, perfect, done. Definitely go for this set also. 48 to 50 iPad. So देखते देखते guys 3 very doable sets हैं and input export वाला भी ऐसा तो नहीं है कि वो doable नहीं है. That is also very doable. So 4 questions here, 8 and 3 over here, right? So 8 3 11 and 5 over there, right? So 16 questions आप definitely कर सकते हो. High scoring set है. Competition and game वाला भी I'm not saying that it's not doable. It just took a little time. मेरा pre-dilection उधर नहीं था, मेरे pre-dilection इधर है. This is how I would prioritize, right? So yeah, that's about it from my side, guys. Hope y'all are grinding hard last few days. Definitely work hard, guys. Best of luck. Thank you.